Hello everyone. I welcome you all in English Wise with Nikita. In this video, I'm going to teach you how to form sentences from basic level. Okay? मैं हिंदी sentence आपको दूंगी. You have to write it in the comment section what is the English sentence of that Hindi sentence. Okay? आपको ये बताना है and you have to check whether you were right or wrong. ठीक है? मजा आने वाला है. Just stay focused and stay here so that you can understand and you can get what is your level, right? So मेरा पहला sentence है मेरा एक दोस्त पागल है. Okay, you have to write it down in your comment section. Okay, in my comment section so that I can understand whether you know it or not. I'm going to share my white screen so that you people get the right answer as well. All right, let's start. मेरा एक दोस्त पागल है. What is the English sentence of this Hindi sentence? All right. मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगी so that you can guess whether you were right or wrong. One of my friends is mad. One of my friends is mad. Okay, so let me know whether you were right or wrong. All right. मेरा एक दोस्त डॉक्टर है. In the same way you have to make it. मेरा एक दोस्त डॉक्टर है. तो इसका आंसर क्या होगा? One of my friends is a doctor. One of my friends is a doctor. Next sentence is मेरे एक दोस्त को कार है. मेरे एक दोस्त को कार है. Now make the sentence. One of my friends has a car. One of my friends has a car. मेरे एक भाई को घर है. मेरे एक भाई को घर है. One of my brothers has a house. One of my brothers has a house. All right. I hope you have understood this. Now I'm going to let you know the structure of this sentence, right? जितने भी sentences मैंने आपको अभी लिखाए हैं उसका structure क्या होगा? One of plus plural subject. One of के साथ आप plural subject लगा रहे हो, ठीक है? Plus singular verb. आप उसके साथ singular verb use करोगे. For example, we have already seen one of my friends has a car. मैंने यूज क्या किया यहाँ पे? ध्यान दें. One of सेम है. One of plural subject. ठीक है. सेंटेंस के वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात करी है. सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट. तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जब प्लूरल सब्जेक्ट होती है जैसे माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई फ्रेंड्स हो रही है बट दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन मैं इसके साथ क्या यूज कर रही हूँ? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब जैसे हैज. अगर प्लूरल वर्ब यूज करना होता तो आई हैव टू यूज हैव, बट हैव नहीं यूज करके यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया? वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ कार. ओके, अगर आपको लिखना है तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं सो दैट आप नेक्स्ट जा करके गलती ना करें. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अ कार, बट इट इज रॉन्ग. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ कार. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर सेंटेंस. एक या दो लड़के पढ़ रहे हैं. एक या दो लड़के पढ़ रहे हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू नो इट और नॉट. मैं तब तक इसका आंसर लिखती हूँ. आप पॉज कर सकते हो. ओके. वन और टू बॉयज आर रीडिंग. सेंटेंस क्या था? एक या दो लड़के पढ़ रहे हैं. एक या दो लड़के
पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया, 1 और 2 बॉयज आर रीडिंग। एक या दो लड़के पढ़ रहे हैं, 1 और 2 बॉयज आर रीडिंग। ठीक है, एक या दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। एक या दो शिक्षक पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेट मी नो इसका सेंटेंस क्या होगा। एक या दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगेन सेम, 1 और 2 टीचर्स, 1 or 2 teachers are teaching, 1 or 2 teachers are teaching। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, 1 or 2 boys are reading, 1 or 2 teachers are teaching। तो मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया है। इससे पहले वाले में हमने देखा सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लूरल वर्ब। ओके, in the same way, 1 or 2 boys are laughing. Okay, 1 or 2 teachers are teaching, 1 or 2 boys are laughing, 1 or 2 boys are reading. All right, we're going to say the next thing, 1 or 2 boys are playing. ठीक है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं 1 or 2, and after 1 or 2 we are using plural subject and then plural verb. 1 or 2 plural subject boys, प्लूरल वर्ब आर, बॉयज के साथ क्या यूज करते हैं, आर। ओके, ऑलराइट, हमने पहले क्या देखा, 1 ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। जब हम 1 ऑफ यूज करते हैं, अगर उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। 1 ऑफ माई सिस्टर्स हैज अ कार। मैं ये नहीं कह सकती हूँ 1 ऑफ माई सिस्टर्स हैव अ कार, इट इज रॉन्ग, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सो 1 ऑफ माई सिस्टर्स हैज अ कार। 1 or 2 boys are playing, 1 or 2 plus plural subject plus plural verb. Hope you have understood till here. Let me know in the comment section, आप कुछ new sentences बनाओ so that I can understand कि आपको समझ में आ गया है। Alright, let's get to the vocabulary section. आज हम 5 vocabulary सीखेंगे। Icon, icon means image, ठीक है। Imbibe, imbibe means absorb. Inferno, inferno means mean होना. Ignoble means hell. Inkling means hint. अब जब किसी को हिंट देते हो, अनुमान लगाते हो, inkling. Ignoble, hell. Inferno, mean. Imbibe, absorb. Icon, image. All right, I want you to make few sentences with these words: icon, imbibe, inferno, ignoble, inkling. We are going to meet soon in the next video, so till then, have a great day. You can watch my another video in the playlist section. If you want to improve your reading part, then you can go and watch my reading playlist where I have used NCERT, which is really very, very important book. If you will get, uh, if you will get some insight about NCERT, you are going to get ample amount of topic, and then you have ample amount of things to speak, so that in this way you are going to be fluent, as well as you're going to get many vocabulary from the NCERT. And also you can follow me on Instagram with the same name, English Vibes with Nikita. And I really appreciate your time and patience. You were here and you are listening to me and you are giving your time to my video. So let me know whether you liked it or not. I'm coming with a new video soon. Hope you have enjoyed it. Bye-bye.